Hi, morning friends. So today I'm coming with future perfect continuous tense. Last one. इसमें क्या होता है? First of all subject, then shall have or will have, then been, then main verb, then ing, then object. First of all subject, then shall have or will have दोनों में से एक और then been, then main verb, then ing, then object. ठीक है ना? मेन वर्ब के बाद ing फॉर्म यूज होता है. परफेक्ट में क्या बताया था हमने? उसके बाद पास्ट थर्ड फॉर्म यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब के बाद. बट यहाँ पे यूज होता है वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म. मीन्स ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है, कंटिन्यूअस से क्वाइट सिमिलर है. ठीक है ना? कंटिन्यूअस से क्वाइट सिमिलर है. कंटिन्यूअस का जो रूल्स है यहाँ पर भी सेम रूल है, बट थोड़ा सा अलग है. बीन यहाँ पर ऐड होता है, बस बाकी सब कुछ सेम ही होता है. एग्जाम्पल्स: आई शैल हैव बीन डूइंग इट सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से. राम विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. राम 2 घंटे से सो रहे होंगे. मैं 4 घंटे से काम कर रहे होंगे. होगा होगी यूज होता है. ठीक है ना? वो 10 साल से यहां पर काम कर रहे होंगे. ठीक है ना? फ्यूचर टेंस, बट वो एक टाइम लिमिट होता है उसमें. यू हैव टू एट द टाइम्स. और यहाँ पर सिंस और फॉर का जो यूज होता है मैं सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि एक क्लास में मैं नहीं बता पाऊंगा पूरा. ठीक है ना? सो I'm just giving you an example that is I is the subject, shall have, will have दोनों में से एक. ठीक है? shall have, then been यहाँ पर यूज होता है. shall have, then been, then main verb is do, then ing form, then since morning it is the object. So I shall have been doing it since morning. राम, नेक्स्ट सेंटेंस, राम विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. राम 2 घंटे से सो रहा होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, होगा होगी. ठीक है ना? ये मेन चीज होता है. मीन्स कॉन्टिन्यूस से क्वाइट सिमिलर है. परफेक्ट में क्या बताया था? चुका चुकी, हाँ चुके होंगे. बट यहाँ पर होगा होगी ये होता है यूज हिंदी में. बट मोर कंसिडर्ड ऑन इंग्लिश. सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू, बस कंसिडर्ड ऑन इंग्लिश. ठीक है? So I'm giving an example, that is Ram will have been dancing for 3 hours. 3 घंटे से राम डांस कर रहा होगा. सीता विल हैव बीन डांसिंग फॉर 3 hours. आई शैल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours. इट विल हैव बीन रेनिंग. वेरी गुड सेंटेंस. इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. Since morning. सुबह से बारिश हो रहा होगा. एक्चुअली पता है, यू नो द वन थिंग आई लाइक टू मेंशन दैट ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज बहुत ही कम होता है. नो लॉन्गर इन यूज. क्योंकि जो टेंस होता है, एक चीज़ आपको बता दूं, टेंस में प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स ग्रामेटिकलिटी इज करेक्ट, बट प्रैक्टिकल सेंटेंस में हम नहीं बोल पाते. होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट इन ग्रामेटिकल इट इज़ राइट. बट इन प्रैक्टिकल केस में ये चीज़ बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब प्रैक्टिकलिटी ये चीज़ नहीं हो पाता है. सो दैट इज़ वाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नॉट सो वेन यूज्ड. ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. ठीक है? जस्ट प्रैक्टिस करो. और आई एम नॉट सेइंग कि ये वीडियो देख के आप सब कुछ सीख जाओगे. टेंस बहुत ही बढ़िया चीज़ है. आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट you learn it within 1 or single days. Many people are saying that if you learn it within 2 days, within 3 days you will learn English. It is not so easy. Keep practicing. Read books, read newspapers, and watch the television's debate. You will learn more English. At the same time, follow the videos. I'm 1%. I'm not saying कि आप अगर मेरे वीडियो देख लोगे तो you will learn English. I can't say like that. It will take some time.
keep practicing, keep reading, read good grammar books, and then watch these videos. You'll definitely learn English. But I'm not saying that only just watch videos and you learn it. It's not so easy. Reading book is very important. At the same time, watch videos. And I'm not saying you watch my videos. You can watch any other videos also. But keep practicing. That is I want to say. Practice करो, आप सीख जाओगे. ठीक है. So this is all about tense. और मैं अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको दोबारा एक क्लास करूँगा. क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि ये आप एक क्लास करोगे तो सीख जाओगे. इट्स नॉट सो ईजी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं ये आपको एक चीज़ बता रहा हूँ. अगर कोई क्लेम करते ना कि एक दिन में मैं इंग्लिश सीख जाऊँगा, टेंस सीख जाऊँगा, ये इट्स टोटली इम्पॉसिबल. If someone comment in the YouTube or any other platform, either you are full or he is going to make you full. That is the reality I'm telling you. And the true reality of learning English. Okay, so thank you so much for your precious time. And if you want this, I again continue this series. Okay, so till then, bye. Jai Hind.